so today we have to start a new topic, that is type of chemical reactions. उसमें है combination reaction. लास्ट वीडियो मैंने स्पेशली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे बनाया है. उसमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप जो मेन 4 है वो एक्सप्लेन करके दिए हुए है. ज्या ज्या लोकांनी मागील व्हिडिओ बघितलेला नसेल त्यांनी राहुल तंत्रपाळे ॲडव्हान्स सायन्स ट्युटोरियल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करून सर्वच्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा. तर आज आपल्याला नवीन टॉपिक बघायचा आहे, तो म्हणजे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शनची पहिलं केमिकल रिएक्शन्स तो म्हणजे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ॲक्च्युली विद्यार्थी मित्रांनो, केमिस्ट्रीच्या मोस्ट ऑफ द ज्या टर्म आहे या केमिस्ट्रीच्या मोस्ट ऑफ द टर्म मध्ये किंवा त्यांच्या नावामध्येच ओव्हरऑल त्यांची डेफिनेशन सुद्धा आहे. जसं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन्स कशाला म्हणणार, तर कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन होणे किंवा जॉइंट होणे. सो व्हॉट इज बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सो व्हेन 2 or more reactants react with each other give rise to a single product, it is called as combination reaction. जेव्हा 2 किंवा अधिक रिएक्टंट एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून नवीन सबस्टन्स तयार होतो त्याला म्हटले जाते कॉम्बिनेशन रिएक्शन्स. So let's start by writing definition. Before going to start the combination reaction, I request to all students take your pen, notebook with you and make your own notes itself. So आप लोगों को पेन और बुक निकाल के completely नोट्स निकालना है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट अगर लेते हो तो वो भी अच्छी बात है. So first one definition, that is when 2 or more reactants reacts with each other gives single product is called combination reaction. Gives single product, so it is called as combination reaction. When 2 or more reactants react with each other give rise to a single product, it is called combination reaction. इसका अगर हम जनरल एग्जांपल देते हैं पहले, तो जनरल एग्जांपल कौन सा है? जनरल रिएक्शन. सो जनरल रिएक्शंस में हम लिखेंगे when 2 or more reactant, that is A plus B, it give rise to AB. So it is the combination reaction. एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो पहला एग्जाम्पल अमोनिया is in gaseous state plus hydrochloric acid is also in a gaseous state get converted to ammonium chloride. So NH4Cl. यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है NH3 plus Cl give rise to ammonium chloride. So this is one is the ammonia. Next one the hydrochloric acid and next one is the ammonium chloride. So this is the first reaction, that is ammonium chloride. Second reaction अगर हम देखते हैं तो second example, that is the burning of magnesium. So that is magnesium is in solid state plus oxygen is in gaseous state. On burning get converted to twice MgO, that is solid state. So twice के बदले पहले मैं MgO लिखूंगा. यहाँ पे 2 है O2, यानी कि 2 नंबर है, यहाँ पे 1 है तो बाद में यहाँ पे 2, और जब twice Mg है तो यहाँ पे भी twice. So this one is the magnesium wire अगर हम बर्न करते हैं in presence of oxygen या फिर ऑक्सीजन के साथ, so it will be give rise to magnesium oxide. क्या मिलेगा यहाँ से? magnesium oxide. So magnesium treating with oxygen get converted to magnesium oxide. So it will be give rise to magnesium oxide. Another example, that is the थर्ड एग्जाम्पल हमें देखना है, वो किसके बारे में? पहले जो हो गया वो हो गया अमोनिया का. नेक्स्ट वन द मैग्नीशियम. अनदर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज द CaO. It is in the solid state. Then water H2O.
is in the liquid state, it get converted to CaOH by 2. CaOH by 2 that is in the liquid state या फिर aqueous state, and some amount of heat is also released. यहाँ पे some amount of heat release होते हैं. So this is calcium oxide. This is calcium oxide on treating get convert means treating with water get converted to calcium hydroxide. It will be get converted to calcium hydroxide and water heat is released. So these are the three examples of combination reaction. Another one, next one, for example अगर हम लेते हैं example iron. Iron is heated with sulfur powder, that is yes solid state, so it will be get converted to FeS. It is in the solid state. So iron treated with sulfur, iron react with sulfur powder get converted to iron sulfide. क्या मिलेगा इससे? Iron sulfide. So this one is the iron sulfide. So this is the chemical reaction in which means when two or more reactants react with each other give rise to a new substance called as combination reaction. So यहाँ पे two or more reactant जो है वो chemically combine होते हैं और उससे हमें कौन सा एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. नेक्स्ट वन इज द, अब हमें देखना है अनदर एग्जांपल. अगर मैं जैसे कि Fe आयरन के Fe जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट होता है तो मुझे आयरन सल्फाइड मिलेगा. अगर एटमॉस्फेयर में जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द गैसेस स्टेट, और नेक्स्ट वन द H2O, it is in the gaseous state but it is in moisturized state, so it will be get converted to, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा वेपर स्टेट and then get converted to H2CO3, that is CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड treating with water vapors, that is moisture get converted to hydrochloric acid. So this is the another example of the combination reaction. This is one of the examples of the combination reaction. Another one example अगर हम लेते हैं जैसे कि POP है या फिर जिप्सम है या फिर पर्टिकुलरली अगर कॉन्क्रीट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का एग्जांपल भी है, जैसे कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस. अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो बाद में. नेक्स्ट वन इज द अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल, दैट इज मींस अनदर टाइप रिएक्शन, दैट इज द सेम रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वन द एग्जांपल उसका, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट इज TriCaO dot Al2O3 plus 6H2O. ह्या ज्या केमिकल रिएक्शनचे जे आपण एक्झाम्पल घेत आहे, हे एक्झाम्पल विद्यार्थी मित्रांनो फक्त स्टेट बोर्ड साठीच हा व्हिडिओ नाही, तर हा व्हिडिओ सीबीएसई साठी सुद्धा आहे. सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा हा याच केमिकल रिएक्शन त्यांच्यासाठी आहे. आतापर्यंत जेवढे आपण व्हिडिओ बनवत आहे हे स्टेट बोर्ड प्लस सीबीएसईच आहे. स्टेट बोर्ड साठी स्पेशल व्हिडिओ म्हणजे पाठवतच आहे आणि सोबतच मी सीबीएसई साठी सुद्धा स्पेशल व्हिडिओ पाठवतोच आहे. तर हा व्हिडिओ स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई दोघांसाठी सुद्धा युजफुल आहे. सो TriCaO.Al2O3 इट इज कॉल्ड एज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट treating with water molecule, so it will be get converted to TriCaO.Al2O3.6H2O. so it is called as the concrete. So this is the another example, and here in this chemical reaction heat is also released. या chemical reaction मध्ये सुद्धा heat release होते. Another example that is the POP. POP चा फॉर्म्युला आपण लिहू शकतो CaSO4.H2O. POP आणि कॉन्क्रीट मध्ये जिप्सम मध्ये एक फरक आहे, तो म्हणजे कसा, तर बघा CaSO4.H2O
याचं मिनिंग असं आहे का 2 CaSO4 सोबत एक H2 मॉलिक्यूल प्लस मीन्स व्हेन another one the H2 molecule treated with the particularly CaSO4 molecules, so it will be give rise to, पर ना मग इथे जे आहे तर 3 H2O मॉलिक्यूल त्याला बॅलन्स करता येईल आपल्याला थ्राइस H2O, सो गेट कन्वर्टेड टू ट्वाइस CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O. याचा मीनिंग सम अमाउंट ऑफ हिट इज आल्सो रिलीज, some amount of heat is also released. So this is the POP, that is plaster of Paris, plaster of Paris, commonly called as POP, and this is the gypsum, gypsum. So here what is the main reason between the POP and gypsum? POP मध्ये ट्वाइस CaSO4 सोबत एक H2O मॉलिक्यूल म्हणजे एका CaSO4 मॉलिक्यूल सोबत एक हाफ H2O मॉलिक्यूल, आणि जिप्सम मध्ये एका CaSO4 मॉलिक्यूल साठी एक H2O, आणि म्हणूनच ट्वाइस CaSO4 सोबत ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व झालेले आहे. सो दिस इज द मेन रिएक्शन्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तर या कॉम्बिनेशन रिएक्शनच्या मेन रिएक्शन्स आहे. ह्या CBSE साठी सुद्धा सेम आहे आणि स्टेट बोर्ड साठी सुद्धा सेम आहेत.